Yes, good evening, students. Now, in day 7, we will explain two important topic. One is the operating system, and second is the computer network. So, this is our 12th and 13th lecture. We are very much thankful to give wonderful opportunity by the School of Study in Physics, Vikram University, to explain computer fundamental to the students. We Coreus Infotech Solution also giving the training, projects, internships based on the industry and also give the opportunity to place in the placements. If any student wants to involve with the curious, he is advised to give the information in the email ID info@curiousinfotechsolution.com. Also, we advise to students to get the updates in our website, that is www.curiousinfotechsolution.com. Now I will give you the detail of today's syllabus. So very first, we will give the introduction of operating system and this computer network. So here I am also giving the one good motivation, actually the position of operating system in the computer layers. So let we have first layer as a hardware, second layer as a operating system, third as a application, and fourth as a user. So this is the actually layers in our computer system. So computer system actually involve operating system as a bridge between hardware and application. So whenever user want to do anything, he will actually give the request to application, and application will request to operating system, and operating system will give the environment in the hardware. Simply in the computer network, we have a actually client, we have a server. So let we have this all server and we have one. This all are the client and this is the your actually server is there. Okay. So I will introduce more deep knowledge of this computer operating system. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या आपको और बताने वाले हैं. So in the next class, we will explain the MS Office and what its applications. The MS Office is a package and we will also explain the MS Word, MS Excel and MS PowerPoint. तो आप सभी क्लास में जरूर से जरूर ज्वाइन करें और we are also providing the videos. अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर समझें और जरूर उसको कुछ आगे अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोगों से कांटेक्ट करें. नाउ कम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सबसे पहला माइंड में यही आता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या ये हार्डवेयर है, क्या ये सॉफ्टवेयर है, इतनी जरूरत क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की है, क्या हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कंप्यूटर चला सकते हैं, ऐसा क्या इसके अंदर मतलब इन्वायरमेंट है या इस तरीके का क्या इसमें चमत्कार है कि हमें इतना अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम काम कर सकते हैं.
तो ये सारी जानकारी हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको डेफिनेशन समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली रिक्वायर्ड टू मैनेज एंड ऑपरेट कंप्यूटिंग डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए बनाया गया है कि कंप्यूटर डिवाइस को मैनेज कर सकें और कंप्यूटर डिवाइस को ऑपरेट कर सकें इन द यूजर फ्रेंडली नेचर में। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि भाई कंप्यूटिंग डिवाइस क्या होती है। तो कंप्यूटिंग डिवाइस में हम ये बोल सकते हैं जैसे स्मार्टफोन है या टेबलेट है या फिर कंप्यूटर्स है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, कार्स हैं, नेटवर्क टावर्स हैं, स्मार्ट वॉचेस, ये सब चीजें हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस में आती हैं। आजकल आपके ड्राइवरलेस कारें आ गई हैं, उसको भी हम लोग आजकल कंप्यूटिंग डिवाइस ही बोलते हैं। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रोल है वो इलिमिनेट्स द नीड टू नो कोडिंग लैंग्वेज। हम ज्यादा से ज्यादा कोडिंग लैंग्वेज को कम करना चाहते हैं। इंटरेक्ट विद द कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस से इंटरेक्शन हम बहुत कम चाहते हैं। हम डायरेक्टली प्लग एंड प्ले का ही अपॉर्चुनिटी यूजर को देना चाहते हैं। Okay, so this is one introduction of the definition of operating system. Okay, तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से एडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम allow us to hide the detail of hardware। हमें हार्डवेयर को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इट एक्चुअली गिव द इन्वायरमेंट जिसमें वी कैन एग्जीक्यूट our programs and applications। Operating system must make sure that computer system convenient to use। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम हमें इंश्योर करता है कि आपको जो भी इन्वायरमेंट दे रहे हैं दैट विल बी एक्चुअली कन्वीनियंस टू यूज। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं देना है इन्वायरमेंट। तो दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंटरमीडियरी एमंग द ऑल एप्लीकेशन। मैंने आपको सबसे पहले बताया था हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच क्या मिलता है, हार्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो इट इज ए इंटरमीडियरी एमंग द एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ इट प्रोवाइड द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेस विद इजी यूज। जैसे मुझे प्रिंटर यूज करना है तो आई कैन वेरी इजीली यूज द प्रिंटर बाय प्लग एंड प्ले कंसेप्ट। मुझे कुछ भी प्रिंटर का नॉलेज नहीं है, मुझे कनेक्शन का भी नॉलेज नहीं है, ओनली आई हैव ए वन सिंगल कनेक्टर, बस उसे लगाना है, कॉन्फ़िगर अपने आप होगा और यू विल गेट ए आउटपुट ऑन द प्रिंटर। तो दिस इज वेरी गुड एडवांटेजेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो वी हैव टू लर्न एवरी कंसेप्ट इन वेरी वेरी डीप, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो कोई भी दूसरे यूटिलिटी प्रोग्राम हो।
Now we will understand the disadvantages. भाई कोई भी मशीन के दोनों ही एंगल होते हैं. वन इज द एडवांटेजेस, सेकेंड इज द डिसएडवांटेजेस. तो वी आल्सो हैव सम इशू लाइक अगर कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में करप्ट हो जाता है या फिर वो कहीं हैंग हो जाता है तो व्हाट विल हैपन, सारा कंटेन लॉस हो सकता है. जो कि हमने स्टोर करा था वो सारे के सारे कंटेंट्स यहाँ पे लॉस हो सकते हैं. इसी तरीके से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, ये एक बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हमें बार बार परचेज भी करना पड़ेगा. विंडो को तो जरूर करना पड़ेगा. अगर ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक ए लाइनिक्स तो उसे हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन विंडो के लिए तो हमें इसे खरीदना पड़ेगा हर साल. तो इट इज ए वन एडिशनल बर्डन टू द यूजर्स कि भाई आपको ये लेना ही पड़ेगा. नाउ इट इज नेवर इंटायरली सिक्योर. क्यों? क्योंकि एज ए थ्रेट कैन अकर एट ए टाइम. भाई ऐसा कुछ भी हो तो सकता है, हम 0.1% ही बोले, लेकिन फिर भी वी हैव टू नॉट 100% सिक्योर towards this type of the system. Now we will understand the function of operating system. Operating system के कौन कौन से functions होते हैं जिसे हमको समझने के लिए और यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा. तो फर्स्ट इज द मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंड इज द प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन, नेटवर्किंग, communication management and job accounting. So these are the very important and useful function of operating system. You know very well the first word is the memory. ठीक है, they are the two type of memory. One is the primary memory and secondary memory. तो इन memory को we have to manage. भाई कब हमको ज्यादा मेमोरी लगेगी, कभी कम मेमोरी लगेगी, कभी हमें प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी शिफ्ट करना है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी शिफ्ट करना है. तो दिस आर द लॉट्स ऑफ वर्क इन ए सिस्टम दैट एक्चुअली डूइंग मेमोरी मैनेजमेंट अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस, जो भी हमारा प्रोग्राम्स है उसे प्रोसेस करना है. तो प्रोसेस कभी पेंडिंग हो सकता है, कभी डिले हो सकता है, कभी डिस्कार्ड हो सकता है, कभी स्किप हो सकता है, कभी वेट करना पड़ेगा. तो देर आर मोर देन 10 to 15 प्रॉब्लम्स आर देयर विद प्रोसेस. अब उन सबको समझना और सबको लाइन अप करना, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. उसको यूज करने के लिए वी हैव ए प्रोसेस मैनेजमेंट. फाइल, इट इज ए सेकेंडरी एस्पेक्ट्स. हमारे पास हर चीजों का एक कंटेनर होगा दैट इज कम अंडर द वर्ड फाइल मैनेजमेंट. तो फाइल कैसे क्रिएट करें, फाइल कैसे डिलीट करें, फाइल कॉपी कैसे करें, फाइल सेव कैसे करें, फाइल को शेयर कैसे करें, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द टर्म ऑफ द फाइल. हम एक एक डेटा को थोड़ी इधर से उधर मैनेज करेंगे, हम ऑल डेटा को कहीं ना कहीं फाइल के कंसेप्ट में लिखेंगे और उसको फिर कंटेनर को हम कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे.
तो उसको मिसमैनेज ना हो उसके लिए वी हैव मैनेजमेंट devices. There are more devices in the our computer system. Input devices, output devices. Input में pointing devices है, then your like a keyboard है, pen drive है, mouse है. तो these are the all devices. Monitor है, printer है. Then how we will manage this all in the our this ग्रुप ऑफ द डिवाइसेस. एवरी टाइम एक प्रोसेस काम कर रहा है, दूसरा प्रोसेस नहीं काम कर रहा है, डिवाइसेस अटैच नहीं हो रहे हैं, हमें उसे डिटैच भी करना है, उससे वर्क भी लेना है. इस तरीके से मैनी एक्चुअली वर्क्स आर विद द डिवाइस. तो उसके लिए इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट हमें करवाना पड़ेगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी कर रहा है. Now similarly we have concept of the this input output management. So we have a what are the input data, what are the output data. This all we are also doing by the separate entity. इसको हम बोल सकते हैं input output management. Now similarly we have a security. तो सिक्योरिटी के लिए भी वी हैव टू मेंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइकवाइज कमांड इंटरप्रेटर, कमांड का इंटरप्रिटेशन भी इट विल बी एक्चुअली थिंक अबाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ वी आल्सो हैव नेटवर्किंग. वी हैव ए ग्रुप ऑफ द नेटवर्क. नाउ दिस नेटवर्क एक्चुअली कम अंडर द one group, or in that group we have to understand the how our computer will work. ठीक है. Likewise communication, whenever any device to device, process to process, there is a communication. So that communication is also maintained by this operating system. Lastly, the job accounting. This is the also responsibility of the operating system. So these are the total 11 functions. Now we will see one by one. Process management. Now process management actually management helps the operating system to create and delete the process. Basically it also provides some mechanisms for synchronization and communication among the process, because in the operating system there are many processes are there that we have to synchronize, that have to communication among this process. It is a very critical and essential job of the function of the operating system. Now next is the memory management. Now this memory management actually perform the task of allocation and deallocation of your memory space to the programs in need of these resources. So we have many resources. And for these resources, the very essential event is allocation and deallocation. We have a common memory. हमारे पास जो मेमोरी है, it is a common. उसी में सारे प्रोग्राम रन होने हैं. तो
जब एक प्रोग्राम रन हो रहा है तो दूसरा प्रोग्राम को वेट करना पड़ेगा, एंड वेन एवर फर्स्ट प्रोग्राम रन हो जाता है तो देयर मेमोरी को डी एलोकेट करके नया प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा. तो दिस इज ए वन वेरी क्रिटिकल टू मैनेज. तो operating system is a responsible for this. Now, file management. Actually, it is a management related to all file related activity. कौन सी हो सकती है? जैसे स्टोरेज करना है, रिट्रीवल करना है, नेमिंग ऑफ फाइल है, शेयरिंग ऑफ फाइल है, एंड प्रोटेक्शन so that no one can actually unwanted alter the contents from the file. So this is come under the word file management. We also have device management. So device actually keeping track of all devices. That devices is nothing but actually the controlling the input output controller, and this is also the task like a memory management as a allocation and deallocation of these devices. So these are the four very major activity in the operating system. Now we will see the next four as a input output system management. Main objective of any operating system is to hide the peculiarity of hardware device from the user. हमें यूजर से एक्चुअली बहुत ही कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही हार्डवेयर एक्चुअली दैट पर्टिकुलर चीज को हमें हाइड करके रखना पड़ता है, बिकॉज वी वांट टू गिव द सिक्योरिटी टू द हार्डवेयर. If these all are open, anyone can make any misusing the hardware. Once the hardware is control of the user, anything will be happen. Now, next is the secondary storage management. This is the actually level of the storage, ठीक है, in which there are primary storage and secondary storage, cache storage. So this all storage actually storing the instruction and data, and this we have to give the for running of program. So this is actually in hand of the secondary storage. Now next is the security and command interpretation. The system actually need security. So this is the module of protection of your data and information. Data और information को हमें किसी भी तरीके से सिक्योर रखना है. So this is the one important requirement in the operating system. Now the command interpretation, whatever we are giving the command, their interpretation should be according to the requirement. So this model is interpreting the command. ये command को interpret करेगा, and we will giving to the we are given by the and acting the system resource to process that command. तो पहले interpret करेंगे और फिर उसके बाद उसे execute करेंगे. Now these are the next four important responsibility of operating system. Now the next three is the networking and job accounting and communication management.
So networking means you have to manage your process, because we are running the group of process as a distributed system. So here we have many shareable devices like a share memory, hardware device or clock. So the processor communicate with one another through this network. Now job accounting, it will be track the time and resource used by various job and users. Lastly, हमारे पास क्या है? We have a communication management. This is coordinating and assignment of compiler, interpreter and other software resources for various users of the computer system. These are the important function हम लोगों ने अभी discuss किया है. Okay. Now, in the next slide, I will explain the features of operating system. Now, features is very essential part of the operating system. First, it should be run in the protected mode and supervisor mode. Your operating system should run in these two type of the mode. It always allow the disk access and the file system driver devices for the network security. It will execute the program. It should be memory management or the virtual memory multitasking. It must handle the input-output operations. It may manipulate the file system. It should be error detection and their handling of errors. Resource allocation and deallocation. And information and resource protections. So these are the very important features of the operating system. Now, in the next slide, we have a type of operating system. अब हम type of operating system को समझने में बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं. हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे फंक्शंस हैं और उसके हमने फीचर्स को समझ लिया है. तो वेरी फर्स्ट वी हैव सिंगल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे एक ही वर्क होता था, उसमें एक से ज्यादा वर्क नहीं होते थे. एंड ऑल कमांड्स आर इन द फॉर्म ऑफ बैच. एक बैच, एक ग्रुप बना लेते थे. नाउ देन मल्टी ऑपरेट प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एक से ज्यादा प्रोग्राम को भी हैंडल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं. एंड देन वी हैव टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल्सो वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बाद में द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्टली हमारे पास क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दिस आर द एक्चुअली टोटल 8 टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर हियर. ठीक है. तो हियर वी हैव सम डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस. फर्स्ट इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली वी हैव द प्रॉब्लम लाइक कि कंप्यूटर प्रोसेस आर वेरी लेंथी एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, बहुत बड़ा होता था, बहुत लेंथी होता था, टाइम कंज्यूम होते हैं इसमें. एंड टू स्पीड द सेम प्रोसेस, a job with a similar type of need are batched together and run as a group of the concept. The user of batch operating system never directly interact with the computer. Computer से interaction users का नहीं होता था. In this type of operating system, every user prepare his and her job on an offline device
like a punch card or submit to the your computer operator. Now, in multitasking and time sharing operating system, actually this type of operating system enables pupil, हम लोगों को एक enable हमको एक user system मिलता है that will be located at a different time terminal known as a shell to use a single operating system at the same time. And the process time, thus the process CPU time, which is shared among the multiple users, that term as a time sharing. Now come to the next type of the operating system. Let we have real-time operating system and distributed operating system. ठीक है, तो real-time operating system क्या होगा? It is a actually operating system make a time interval to the process and respond to the input is very small. For example, military of software system, space software system, real-time operating system. So these are the actually kind of real-time operating system. अब हम देखते हैं distributed operating system. In the distributed operating system, many processors actually located in a different machine. So distributed operating system actually provides very fast computation to its user through the some mechanism. So distributed is very much useful whenever we are locating the system in a far away. Now come to the your network operating system and mobile operating system. So network is nothing but run on the server, or it provides the capability to serve the manage data, serve the user group and security and application to the other networking functions. Now lastly, we have a mobile operating system, and this operating system is especially that are designed for power smartphone, tablets and the wearable devices. So these are the actually most famous operating system known as a Android and iOS system. And other are mobile operating system like a BlackBerry, Web and the Watch operating system. So this is about the types of operating system. Now we will discuss the example of operating system. So Linux is a open platform, it is a free to use, no need to give a money. Then we have a Apple operating system, Windows operating system, and Ubuntu. Ubuntu is a type of Linux, Unix operating system. Also we have Android, then MS-DOS. It is a first operating system. Then Mac operating system, then BlackBerry, and we have also OS2 operating system. So these are the example of operating system. Now we will see some feature of Windows operating system. Okay. Now we will discuss some importance of the Windows operating system. Now very first we will try to understand the desk of the operating system of Windows. So it is located on the monitor screen. जब भी हम विंडो को ऑन करते हैं तो एक हमें विंडो की स्क्रीन मिलती है, that is known as the desk of the your operating system. It has different form depending on the version of the platform. तो ये अलग अलग विंडो वर्जन के अलग अलग थोड़े से डेस्क बोर्ड आते हैं. Now
this window operating system actually provide the pleasant and comfortable platform for the user. अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इट इज ए वेरी मच comfortable to run the your application. Actually, it is a foundation on which window is based. Okay, so this is about the some brief of the window operating system. अब हम बात करते हैं menu in the operating system. So in this menu we have actually various subtopic, है ना. मेनू में बहुत सारे टॉपिक होते हैं. We can configure, we can customize the window operating system. It is actually giving the option to hide and to visible their options. Similarly, it also facilitates to use and access the all components provided by the system. You can limit it to the running one program at a time. It also has a control panel. ठीक है. So in that control panel, you can actually modify the various aspects such as time, date, device, among the other concepts. So it is the actually user-friendly control panels are there. Now, in the next slide, we will understand the start button. So, in window operating system, we are very much familiar with the one start button. ठीक है. तो जैसे ही बूट करेंगे आपको विंडो के बाद में एक स्टार्ट बटन मिलेगा. तो दिस स्टार्ट बटन इज नथिंग बट द स्विच फॉर user your interface. So by this start button you can switch to application. Now its function is to show the menu which is all the program constituted. Now here it is designed so that it is located at the bottom left of the screen. आप जब भी देखेंगे स्टार्ट बटन कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में और बॉटम में मिलता है. It gives advantage of showing the programs and application most used by the user. Okay, it also offer the search engine. है ना. यहाँ पर एक कोई सर्च करने के लिए भी ऑप्शन है. You can type to you want to search. So it will be facilitate the search for the specific program in complete operating system. तो दिस इज अबाउट द स्टार्ट बटन फीचर्स. अब हम देखते हैं द टास्क बार. तो इन दिस टास्क बार एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग ऑल यूजर टास्क, है ना, जो कि एक्टिविटी हैं और लोडेड होते हैं. अगर हमें इसमें से किसी को क्लोज करना है, डीएक्टिव करना है, शट डाउन करना है, तो वी कैन शट डाउन. समटाइम द सिचुएशन विल अराइज कि हमें कभी कंप्यूटर में कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन वी शुड गो इन द टास्क पार्ट और वहां से यू कैन डीएक्टिवेट दिस कंसेप्ट. एक्चुअली टास्क बार गिव द ऑप्शन टू नेविगेट. हमें नेविगेशन का ऑप्शन देता है बिटवीन द टास्क परफॉर्मेंस. हमें पता चल सकता है कि हमारा टास्क, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है. एक्चुअली दे ऑफर द शॉर्टकट टू एक्टिवेट देयर फंक्शन. अगर हम माउस है तो माउस से एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की है अल्टर और टैब की. आप अल्टर और टैब की प्रेस करिए तो यू कैन स्विच, यू कैन actually shift, you can switch the all applications. Now actually we have a ability to perform various tasks simultaneously in the same time, है ना. ये एक्चुअली विंडो की
characteristics है कि you can do this all in a same time. So sometime the problem will come. We can resolve that problem through the deactivate the some task. अब हम देखते हैं about the computer network. तो computer network is what? It is a group of networking. ठीक है. Now see, a computer network is a group of device that are connected with each other. सब लोग सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. उसमें एक ट्रांसमिशन मीडिया लगा रहता है. उस मीडिया के कारण आप सब कंप्यूटर से इंटरैक्टिव हो सकते हैं. तो ये जो ट्रांसमिशन मीडिया रहता है वो वायर भी हो सकता है या फिर केबल भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है, जिसको हम वाईफाई बोलते हैं. नाउ दिस डिवाइस कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन. तो इन सबको हम एक्चुअली अपने कंप्यूटर नेटवर्क में इन्वॉल्व करते हैं. और अगर मैं पर्पस की बात बोलूं तो इट इज ए पर्पस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा stored in the other devices over the network. So these devices actually refer to as what? Nodes. इसको हम लोग nodes के नाम से बोलते हैं. भाई मेरे पास में ये नोड नहीं है, so that I can not able to send data. Now basic component of computer network क्या क्या होंगे देखिए यहाँ से. तो let I have two important things. One is the protocol. This is also a protocol. Rules and here also rules. So we have a protocol. In the protocol, basically there are the rules are there. और you can say कि protocol rules के द्वारा बनाया जाता है. एक तरफ sender node होगा, एक तरफ receiver node होगा. Sender और receiver के बीच में एक केबल लगा रहेगा. उस केबल के द्वारा सेंडर एक्चुअल मैसेज भेजेगा और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा. तो दिस एक्चुअली कनेक्शंस आर एक्चुअली नोन एज ए ट्रांसमिशन मीडिया. अब ये मीडिया वायर का भी हो सकता है, केबल का भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. तो मैसेज एक्चुअली इट इज ए डेटा, इट इज ए इंफॉर्मेशन. मैसेज क्या है? इट इज ए डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जो कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं. नाउ व्हाट यू मीन बाय सेंडर एंटिटी? सेंडर क्या है? सेंडर इज ए डिवाइस. सेंडर इज ए डिवाइस दैट हैज ए डेटा and need to send your data to other device by this network. Now what is the receiver? Receiver actually receive the device and is expecting the data from the other device on the network. Now what is the transmission media? Transmission media is only responsible to carry the your data from one node to another node using either wire, cable or radio wave, anything. Bluetooth is also there. Now what do you mean by protocol? Protocol is nothing but it is a governed by the set of rules that are agreed by both sender and receiver. Without protocol दो डिवाइस कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, बट दे कैन कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी एबल टू कनेक्ट. तो दिस इज अबाउट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो वी हैव ए वेरी पॉपुलर features like a performance of your computer network. तो जितना
अच्छा क्वालिटी का नेटवर्क होगा, वी विल नॉट गेट ए एरर इन दैट. डेटा शेयरिंग इज ए वन रिक्वायर्ड फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. डेटा को शेयर करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग, जैसे व्हाट्सएप में डेटा शेयर होता है, हम लोग बोलते हैं शेयर करो डेटा, डेटा शेयर करो. इट इज ए काइंड ऑफ द यूर कंप्यूटर नेटवर्क. बैकअप, बहुत समय हमें बैकअप लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अनवांटेड एक्सीडेंटल में अगर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो गया तो वी हैव टू टेक ए बैकअप, एंड बैकअप से हम अपना रिकवरी करते हैं. इसी तरीके से ये रिलायबिलिटी सिस्टम बन सकता है. अगर ये रिलायबिलिटी सिस्टम बनाना है तो हमें बैकअप लेना बहुत कंपलसरी है. नाउ दिस सिस्टम शुड बी सिक्योर, नहीं तो इसमें कभी भी वायरस या फिर हैकर्स भी अटैक कर सकते हैं. हमारा सिस्टम स्केलेबल होना चाहिए. समय पड़ने पर हम इसे स्केल कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर ये कंपेटेबल होना चाहिए. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट वी हैव टू फॉलो इन द कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ कम टू the word is the your architecture of computer network. So here I have two architecture. One is the peer-to-peer and second is the client-server architecture. Okay, this is the your client server and it is a peer-to-peer architecture. So in the peer-to-peer, every node are connected to each other. This node is a peer-to-peer. Client server means you have a one server, it is the one server, and we have clients. These are the one client, another client, another client, another client, and these are the 5 clients. These all 5 clients are connected to your server. Okay, so this is about the computer network architecture. Now we have to understand very important basic component of our computer network. So first is the your server. Server is the first important component of the computer network. Server क्या करता है? Server actually runs the operating system and hold data that can be shared over a computer network. So this is the responsibility of server. Now what about the client? क्लाइंट क्या करेगा? एक्चुअली क्लाइंट है ना, व्हाट इज द मीन बाय द क्लाइंट? क्लाइंट क्या करेगा? देखिए इससे पर समझाता हूँ. नाउ क्लाइंट, दिस इज माय क्लाइंट. ठीक है, नाउ क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट इज ए कंप्यूटर, है ना. क्लाइंट क्या है? एक कंप्यूटर है. क्लाइंट मे बी पॉसिबल प्रिंटर है, मे बी पॉसिबल सम अदर devices like a fax machine है. तो this is nothing but receive, है ना. नेटवर्क में है, डेटा को रिसीव करेगा और अदर कंप्यूटर को सेंड करेगा. नाउ ट्रांसमिशन मीडिया, तो इट इज ए यूर ट्रांसमिशन मीडिया. इज देयर इन ट्रांसमिशन मीडिया? नो. तो वन मीडिया इज देयर, है ना. मीडिया इज देयर, कंप्यूटर मीडिया. ऑल कंप्यूटर कनेक्ट विद द सम each other through the transmission. ट्रांसमिशन के थ्रू सब लोगों को हमें जोड़ना पड़ेगा. तो वी हैव ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा तो उसके थ्रू हम इस सबको जोड़ सकते हैं. ऑल्सो वी नीड हब. जब हमें बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना है तो वी नीड वन हब. ओके, वी नीड ए वन हब. हब की जरूरत पड़ेगी. तो हब एक्ट डिवाइस दैट कनेक्ट ऑल कंप्यूटर इन नेटवर्क टू ईच अदर. ठीक है, और हम दूसरी चीज अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो लेट द नेक्स्ट स्लाइड इज स्विच राउटर, है ना. केबल इज ए ट्रांसमिशन मीडिया, है ना. केबल को ट्रांसमिशन मीडिया मान सकते हैं, बोलना है. नाउ स्विचेस. स्विचेस इज व्हाट? Switches is similar to the hub. However, it is actually broadcasting a incoming data request to the user of the physical device. है ना. इसका काम केवल इतना ही रहेगा.
कि वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा। नाउ राउटर वो इसे पाथ देंगे, ये राउटर ज्वाइन द मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क टू ईच अदर, वो राउट करेगा। नाउ द लैन केबल इज ए वायर that will connect more than one computer or other device to the in like your printer and scanner. Okay, now we will understand last two slides are there. Now we will understand the first is the your type of computer network. So we have a topology. Okay, we have a topology, computer topology. One is the point-to-point topology, the one computer to computer. Then bus topology, देखिए बीच में बस है और बस से सब connected हैं. Ring topology, the fashion to connect all in the ring fashion. Mesh, mesh means we have some type of the your tree concept is there है ना. So this mesh is there. Then also we have a tree, it is a fully tree. Then also we have a star. Star में क्या है, एक आपके बीच में सर्वर है और सारी तरफ कनेक्टेड है नोड से. Now hybrid means every type of topology that can be come under this hybrid. ठीक है, तो it is a type of the topology, हम according to task इसको attach करते हैं. Now last slide is your type of the computer network. So there are the three type of computer network. First is the local area, LAN, metropolitan area network, MAN, and third is the wide area network. ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क को तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं लैन. तो जब हमें कोई छोटा यानी कोई एक रूम में आपको काम करना है तो यू कैन यूज द इथरनेट एंड द लैन कंसेप्ट इज देयर. अगर मुझे कोई बड़े एक मतलब एरिया में काम करना है, लाइक ए स्कूल इज देयर, हॉस्पिटल इज देयर, फैक्ट्री एंड कॉलेज, दिस इज द वन बिग ऑर्गेनाइजेशन बट इन द वन प्लेस, आई हैव टू यूज दिस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और अगर मुझे बहुत डिस्टेंस में काम करना है तो आई शुड यूज दिस काइंड ऑफ वैन. So this is the description of the type of computer network. तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी चीजें आज समझी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में. आप जब भी कभी आपको इनकन्वीनियंस हो तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वी विल ट्राई टू गिव बेस्ट टू योर स्किल्स. थैंक यू to all students and thank you to the School of Study Physics in